So welcome to my channel Inspire Pharma. Good morning to all of you. So as in the last video we have discussed the various categories of drugs which can be used for the treatment of depression. So in this video we are going to discuss about the further more drugs which can be used in the treatment of depression. The first is tricyclic antidepressant जिनको TCA बोला जाता है. The examples of tricyclic antidepressants include imipramine, clomipramine, decimipramine, trimipramine, amitriptyline, meprotidine, amoxicillin, and doxepin. So these are the certain examples of a tricyclic antidepressant drugs. Let's talk about how these drugs actually work. These are the drugs which ultimately block the reuptake of norepinephrine and the serotonin. अभी तक हम अभी in the all the category of drugs, all the drugs work by inhibiting the reuptake of the neurotransmitter. So same with the tricyclic antidepressants. These are the drugs which ultimately block the reuptake of norepinephrine and the serotonin neurotransmitter. If we talk about the mechanism of action of these drugs, they basically inhibitors of neurotransmitter uptake. TCAs, that is a tricyclic antidepressants, are the potent inhibitors of neuronal reuptake of norepinephrine and the serotonin. I already told you कि वो synaptic cleft में जो neurotransmitter का reuptake होता है उसको inhibit कर देते हैं, due to which they basically potentiate the concentration of number of monoamines like norepinephrine and the serotonin की concentration को increase कर देते हैं by inhibiting the reuptake in the synaptic cleft. Okay. Meprotidine and decipramine are the relatively selective inhibitor of norepinephrine reuptake. जो दो drugs होते हैं, that is meprotidine and decipramine, as comparison to the other drugs, they are the very selective inhibitors of norepinephrine reuptake. Okay, the tricyclic antidepressant drugs, they also blocking the adrenergic receptors, histaminic receptor, and the muscarinic receptors. So because this is actually the side effects of tricyclic antidepressant, as in my other video I have discussed that they are the selective norepinephrine reuptake inhibitor. These drugs actually don't block the muscarinic receptor, they don't block the histaminic receptor, they don't block the adrenergic receptors. That's why उनके adverse effects कम होते हैं. But tricyclic antidepressant, they lead to the blockage of all these receptors, due to which they causes the number of adverse effects. Actions. If I talk about what is the actions that are induced by tricyclic antidepressants, they elevate the mood of the patient, they improve the mental alertness in the patient, they potentiate the physical activity of the patient, and ultimately reduce the morbid preoccupation in the 50 to 70% of the individuals with the major depression. So ultimately, because of major depression, we have some other morbidities, we have some other effects. So ultimately, these drugs elevate the mood of the patient, they improve the alertness of the patient. The onset of mood elevation is slow taking. मूड एलिवेशन होता है, इनमें भी यही होता है कि ये एटलीस्ट मोर देन 2 वीक्स लेते हैं फॉर द एलिवेशन ऑफ द मूड इन द पेशेंट. नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और द मूड एलिवेशन इन द नॉर्मल इंडिविजुअल. सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि दिस दे आर द सर्टेन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स व्हिच ओनली एलिवेटिंग द मूड इन द डिप्रेस्ड पेशेंट. नो सर्टेन काइंड ऑफ द इफेक्ट हैज बीन ऑब्जर्व्ड in the normal individual. The physical and the psychological dependence is very rare. Okay, so the physical and the psychological dependence that is produced by these drugs is very rare. इनसे कोई भी ऐसी dependence नहीं होती है. Slow withdrawal to minimum discontinuation syndrome and cholinergic rebound effects. इनके withdrawal effects भी नहीं रहते हैं, जैसे कि discontinuation syndrome, discontinuation effects other drugs में find out किए गए थे. They can be used for the prolonged treatment of depression. हम tricyclic antidepressant drug को use कर सकते हैं for the prolonged treatment. अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए ड्रग को लेना है, लॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो वी कैन यूज दिस कैटेगरी ऑफ ए ड्रग. इफ आई टॉक अबाउट द थेरेपेटिक यूसेस ऑफ दिस ड्रग, these drugs are very effective in the treatment of moderate to severe kind of a depression.
some patients with a panic disorder, अगर कुछ patient में कुछ panic disorder है, they also respond to tricyclic antidepressants. So we can give to the patient who are having the symptoms of panic disorder. Mipramine has been used to control the bedwetting in the children older than the age 6 year by causing the contraction of internal sphincter of the bladder. So ultimately, imipramine, desipramine, these are the certain tricyclic antidepressant drug. These drugs are used for the controlation of the bedwetting in the children. जो बच्चे जो होते हैं जिनकी एज होती है वो 6 ईयर से ज़्यादा होती है, उनमें अगर bedwetting के सिम्टम्स आते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इमिप्रामाइन को यूज कर सकते हैं. यूज कॉशियसली एट प्रेजेंट because of the inductment of cardiac arrhythmia and other cardiovascular problems. हमें इन drugs को with very cautiously use करना चाहिए because these drugs can induce the certain negative effects on the cardiac system. They can induce cardiac arrhythmia and various other cardiovascular problems. The TCA, particularly amitypyrilene, are used to treat the migraine headache and the chronic pain syndrome in the number of conditions for which the cause of the pain is unclear. The tricyclic antidepressant, particularly जो amitypyrilene drug होता है, these are the drugs which are used for the treatment of migraine and headache and chronic pain syndromes के लिए भी हम इसको use कर सकते हैं. Low dose of tricyclic antidepressant, especially doxepin, is used for the treatment of insomnia. So अगर डिप्रेशन की वजह से पेशेंट्स में इंसोम्निया भी प्रोड्यूस हो चुका है, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप, उसमें भी हम TCA जिसकी डॉक्सीपिन को यूज कर सकते हैं. बट व्हाट थिंग वी नीड टू कंसीडर इज दैट वी हैव टू यूज अ वेरी लो डोसेज. ओके, बट टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स, बिकॉज मैंने अपनी लास्ट पीपीटी और लास्ट स्लाइड में ये बताया है कि ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट लीड टू द ब्लॉकेज ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स एंड नंबर ऑफ अदर रिसेप्टर्स को वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इंड्यूस्ड बाय दिस ड्रग्स आर मोर. The first adverse effect is they lead blockage of muscarinic receptors, क्यों कर देते हैं, जिसकी वजह से number of side effects like blurred vision, आपका माउथ जल बहुत ड्राई होगा, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन रिटेंट होता रहेगा, साइनस टैकीकार्डिया जिसका इंक्रीज इन द हार्ट बीट इन द पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. आफ्टर द कार्डियक कंडक्शन which may participate life threatening arrhythmia in overdosage. So ultimately अगर हम इन ड्रग को overdosage में देते हैं तो ये कार्डियक arrhythmia भी इंड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज मैंने ये भी बताया था कि दिस ड्रग्स ब्लॉक द एडेनर्जिक रिसेप्टर्स ड्यू टू विच दे कैन कॉज अ नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स. दे कैन कॉज अ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब क्या रहता है कि अगर बंदा अचानक से बैठ के खड़ा हो रहा है तो उसका जो बीपी होगा वो काफी डाउन हो जाएगा. सो दे कैन कॉज अ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, दे कैन कॉज अ डिजीनेस, दे कैन कॉज अ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया विच इज अगेन द इंक्रीज इन द हार्ट बीट इन द पेशेंट. Okay, amipramine is the most likely, notifying the least likely. amipramine जो होता है उसके थ्रू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन साइड इफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. ओके, सेडेशन अपने फर्स्ट वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट में वो सेडेशन भी इंड्यूस करते हैं, बंदे को स्लीप ज्यादा आएगी, बंदा काफी लेजी फील करेगा. सो सेडेटिव इफेक्ट इज बिकॉज दिस ड्रग ऑल्सो ब्लॉक द हिस्टामिनिक H1 receptors. Weight gain can also be there and the sexual dysfunctioning kind of a side effect can also be produced. So ultimately these drugs has a more severe side effects as comparison to the other drugs. So that's why they are more not as a treatment of choice for the treatment of depression. ओके क्योंकि वो एडेनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देते हैं, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, एंड दे आल्सो लीड टू द ब्लॉकेज ऑफ हिस्टामिनिक H1 receptors. Okay, precautions what we have to consider when we are prescribing the tricyclic antidepressant drugs to the patient. Tricyclic antidepressant and all other antidepressants should be used with very much precaution in the bipolar disorder. हमें इन ड्रग्स को बाइपोलर डिसऑर्डर में काफी प्रिकॉशंस के साथ यूज करना है, बिकॉज ऑन एंटीडिप्रेसेंट में कॉज ए स्विच टू द मैनिक बिहेवियर.
Okay, the tricyclic antidepressant have a very narrow therapeutic index. Suicidal patients should be given only very limited quantities of these drugs and be monitored closely. So therapeutic index का मतलब क्या रहता है कि जब एक ड्रग की एक स्लाइट कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन करने से उसके साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, तो हमें बहुत इसका थेरेपेटिक इंडेक्स काफी नैरो रहता है. अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर डोजेज इसकी पेशेंट को दे देंगे तो पेशेंट की जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है. ठीक है. सो दैट्स वाई व्हेन इफ यू आर गिविंग दिस ड्रग्स टू द पेशेंट, सुसाइडल पेशेंट जिनमें पहले से ही सुसाइडल टेंडेंसी है, उस तरह के पेशेंट को देते हैं, उनकी जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो पोटेंशिएट हो सकती है. सो दैट्स वाई जब हम उनको दे रहे होते हैं ये ड्रग, हमें बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी को देना है एंड वी हैव टू मॉनिटर दोज पेशेंट वेरी क्लोजली. Okay, the tricyclic antidepressant may exacerbate certain medical conditions like unstable angina, benign prostatic hyperplasia, epilepsy and pre-existing arrhythmia. अगर किसी पेशेंट को पहले से अनस्टेबल एंजाइना है, उनको नहीं देना है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि they can cause a number of cardiovascular problems. अगर किसी पेशेंट के प्रोस्टेटिक ग्लैंड का साइज जब वो काफी इंक्रीज हुआ है, उसको मैं नहीं दे सकते. अगर पेशेंट को एपिलेप्सी है, उस पेशेंट को हमें नहीं देना है. अगर पेशेंट को पहले से ही कार्डियक रिदमिया की प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट्स को भी हमें नहीं देना है. सो इन सभी पेशेंट्स में हमें ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स को नहीं देना है. ठीक है. लास्ट एंड नॉट लीस्ट इज वन ऑफ द ड्रग दैट इज मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग. As we know that monoaminoxidase is an enzyme which is responsible for the degradation and the metabolism of number of neurotransmitters. Those neurotransmitters include norepinephrine, dopamine and the serotonin. Okay, this is a monoaminoxidase inhibitor. So अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो इन सभी जो न्यूरोट्रांसमीटर का डिग्रेडेशन नहीं होगा, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिसकी वजह से उनकी कॉन्सेंट्रेशन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में काफी बढ़ जाएगी. So monoaminoxidase inhibitors, they inactivate the monoaminoxidase enzyme, okay, permitting the molecules to accumulate within the जिसकी वजह से अगेन उसके जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. Okay, so monoaminoxidase inhibitors. Okay, so examples of monoaminoxidase inhibitor drugs include isocarboxylate, phenylazine, transcycloprene, and salicyline. So these are the certain examples of monoaminoxidase inhibitor. Mechanism of action. मैंने पहले बताया कि most monoamino oxidate form the stable complexes with the monoamino oxidase causing the irreversible inactivation. Most of the monoamino oxidase inhibitors drugs क्या करते हैं, वो उस एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसकी वजह से उस एंजाइम की irreversible एक्टिवेशन हो जाती है. वो एंजाइम दोबारा काम नहीं कर पाएगा. इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है नोरेपिनेफ्रिन की, सेरोटोनिन की, डोपामिन की, इन सभी की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इंक्रीज हो जाती है. यही इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. दिस ड्रग्स आल्सो इनहिबिट द monoamino oxidase enzyme in the liver and the gut that catalyzes the oxidative deamination of drugs and potentially toxic substances tyramine, which is found in the certain foods, causing a high incidence of drug and drug food interaction. So basically मोनोमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम का एक यूजफुल रोल भी रहता है. उसका एक यूजफुल रोल क्या रहता है कि वो हमारे लीवर में जो वो प्रेजेंट होता है तो वो नंबर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है बाय द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन मैकेनिज्म. बट बिकॉज दिस मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स वी आर गिविंग टू द पेशेंट, those drug inhibit those particular enzyme because of which the degradation or detoxification of those toxic substance get inhibited. So ultimately उससे क्या होगा, जो टायरामीन की सब्सटेंस होते हैं जैसे चीज में भी टायरामीन होता है तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में काफी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग फ्रूट इंटरेक्शन के ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं. सो सैलिजिलिन में प्रोड्यूस सैलिजिलिन आउट ऑफ ऑल दिस ड्रग. सैलिजिलिन एक ऐसा ड्रग है जो इस तरह का इफेक्ट वो जो लीवर में जो मोनोमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसको इतना ज्यादा इनहिबिट नहीं करता है. सो दैट्स व्हाट द सैलिजिलिन. ओके, एक्शंस. द एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ऑफ मोनोमाइनो, इसका भी एक्शन क्या रहता है, काफी वीक्स के बाद प्रोड्यूस होगा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट एक्शंस ऑफ ड्रग्स वो हमें काफी टाइम के बाद ही मिलते हैं. उनका जो एक्शन होता है वो काफी टाइम लग जाता है उनके एक्शंस को अचीव करने में. सेलिजिलिन एंड साइक्लोप्रोमाइन. ओके,
Salicylic and tricyclopromine have an amphetamine-like stimulant effect that may produce the agitation or the insomnia. Okay, so salicylic and tricyclopromine have an amphetamine-like stimulant effect that may produce the agitation or the insomnia kind of a effect. Okay. Therapeutic uses. So we can give this patient for the depressed patient who are unresponsive or allergic to the TCA, or who experience strong anxiety. So these drugs उन्हीं को दिए जाते हैं जो लोग जो होते हैं वो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, उनको एलर्जिक रिएक्शंस रहती हैं TCA से, और जिनको स्ट्रॉन्ग एंजाइटी होती है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ TCA. तो उन्हीं पेशेंट में हम जाएंगे. ट्रीटमेंट ऑफ फोबिक स्टेट, दिस इज द वन ऑफ द मेजर कंडीशन. वी कैन प्रिस्क्राइब दिस ड्रग्स टू द पेशेंट हु आर अंडर द फोबिया कंडीशन, जिनको किसी तरह का फेयर रहता है. ट्रीटमेंट ऑफ एटिपिकल डिप्रेशन, लेबाइल मूड, मतलब उसका मूड काफी लो रहता है, रिजेक्शन सेंसिटिविटी, कोई किसी चीज में वो फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में वो काफी डिप्रेस्ड रहता है. एपेटाइट डिसऑर्डर, भूख नहीं लग रही है, सो उस कंडीशन में इस ड्रग को हम दे सकते हैं. बट ये ड्रग जो होते हैं वो लास्ट choice of treatment होते हैं for the treatment of depression, because the risk of drug interactions and the drug food interactions is very high because of this drug. Okay, enzyme regeneration, when irreversible activity occurs several weeks, so when switching at a minimum of 2 weeks of delay must be allowed after the termination of mono and initiation of another antidepressant, because this drug irreversibly leading to the deactivation of the monoaminoxidase enzyme. That's why the वो enzyme हमें useful effect के लिए भी चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है enzyme की रीजनरेशन में. ठीक है, सो वी हैव टू मिनिमम ऑफ 2 वीक ऑफ डिले मस्ट बी अलाउड आफ्टर द. जब हम मोनोमाइनोऑक्सीडेज थेरेपी को स्टॉप कर देते हैं पेशेंट में, तो हमें 2 वीक्स का डिले अलाउड करना चाहिए. ठीक है, सो कमिंग टू द एडवर्स इफेक्ट्स, yes, they can induce the adverse effects, severe adverse effects due to the drug and the drug food interaction. जो मैंने पहले ही बताया, अब मैंने बताया कि टायरामीन जो होता है वो नंबर ऑफ यूजफुल जो होता है फूड सब्सटेंसेस, मीट्स में होता है, चिकन में होता है, स्मोक्ड फिश, रेड वाइन, इन सभी में होता है टायरामीन. और वो टायरामीन जो होता है उसको इनएक्टिवेट करने वाला कौन होता है? मोनोमाइनोऑक्सीडेज एंजाइम, which is present in the liver and the gut of a patient. Okay, so in individual receiving a monoaminoxidase enzyme are unable to degrade the टायरामीन, मतलब इंडिविजुअल जो मोनोमाइनोऑक्सीडेज रिसीव कर रहे होते हैं, दे आर अनेबल टू डिग्रेड द टायरामीन, causing the release of large amount of stored catecholamines from the nerve terminals. So because the individual जो monoaminoxidase enzyme रिसीव कर रहे होते हैं वो टायरामीन को डिग्रेड नहीं कर पाते, और वो टायरामीन क्या करता है, वो हमारी बॉडी में जो नंबर ऑफ कैटेकोलामाइंस होते हैं, जैसे कि हो गया एड्रेनलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, उनके रिलीज को फास्ट कर देता है. अब वो रिलीज हो जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट इंड्यूस करेंगे, और उनका साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाई इंक्रीज इन द बीपी ऑफ अ पेशेंट, बच्चों को हेडेक होने लगेगा, स्टिफ नेक हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, नोजिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमिया, सीजर, स्ट्रोक, इस तरह की साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे. तो जब भी हम मोनोमाइनोऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स पेशेंट को दे रहे होते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि पेशेंट को एजुकेट करें टू अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टायरामीन कंटेनिंग फूड्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, सो जब बंदे को इन ड्रग्स की वजह से उसको जो हाइपरटेंशन हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए हम फेंटोलामाइन एंड प्राजोसिन ड्रग्स दे सकते हैं. ओके, दिस में बी डेंजरस इन द, मैंने पहले बताया कि जिन पर्सन में पहले से सुसाइडल टेंडेंसी है उनमें हमें नहीं देना चाहिए. वी शुड बी अवॉइड दोज ड्रग्स. ड्राउजीनेस रहता है पेशेंट में, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होने के भी चांसेस रहते हैं. सो दिस इज द सर्टेन साइड इफेक्ट्स व्हिच आर इंड्यूस्ड by this particular kind of drugs. Okay, मोनोमाइनोऑक्सीडेज इनहिबिटर और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, हम इन दोनों को ड्रग को इकट्ठे नहीं देना है बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग सेरोटोनिन सिंड्रोम. क्योंकि उससे क्या होगा, मोनोमाइनोऑक्सीडेज एंजाइम वो भी सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी में एक्सेस लेवल में सेरोटोनिन इकट्ठा हो जाएगा. इससे पेशेंट में नंबर ऑफ सिम्टम्स लाइक हाइपोथर्मिया, मसल रिजिडिटी,
स्वेटी, मसल ट्विचिंग, मसल काफी ट्विच करेंगी, मसल में काफी रिजिडिटी होगी, पेन होगा मसल में, एंड मेंटल स्टेटस में चेंजेस आ जाएंगे. Both type of drugs require a washed out period of at least 2 weeks before the other type is administered. मतलब अगर हम एक मतलब अगर हम SSRI पेशेंट को दे रहे हैं तो उससे एटलीस्ट 2 weeks के बाद हमें मोनोमाइनो ऑक्सीडेज ड्रग्स पेशेंट में देने चाहिए. फ्लॉक्सीसिन शुड बी discontinued at least 6 weeks बिफोर ए. अगर हम फ्लॉक्सीसिन ड्रग को ले रहे हैं तो पहले 6 हफ्ते पहले उसका बंद करना चाहिए, फिर हमें मोनोमाइनो ऑक्सीडेज को स्टार्ट करना चाहिए. अगर combination of monoaminoxidase and bupropion can produce a seizures in the patient. So number of side effects are there with the monoaminoxidase inhibitor drug. That's why they're the last treatment of choice for the treatment of depression. Atypical antidepressants, they act at a different side. They have the similar antidepressant effects as that of a TCA and the SSRI, but very different side effects. The examples include trazodone, nafazodone, buprenorphine, and mirtazapine. Okay, bupropion, weak dopamine and the norepinephrine reuptake inhibitor. इसका काफी weak action रहता है, weak uptake reuptake inhibitor करता है. Bupropion also assists in decreasing the craving, हमें में क्रेविंग, एंड अटेनुएटिंग द विड्रॉल सिम्टम फॉर द निकोटीन इन टोबैको यूजर्स. तो इसको हम दे सकते हैं जैसे कोई टोबैको एडिक्टेड पेशेंट्स होते हैं, तो जब उनको उनको वो उसको स्टॉप करने के बाद उनमें नंबर ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो उन पेशेंट भी दे सकते हैं. इसको हम कोकेन विड्रॉल के लिए भी दे सकते हैं, बट यस इट ऑल्सो इंड्यूसेस द नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग द ड्राई माउथ, nervousness, tremor, increased risk for the seizures at a higher dosage. So this is something happens. Okay, mirtazapine, they enhances the serotonin and norepinephrine reuptake by blocking the presynaptic alpha 2 receptors and 5-HT receptors. So ultimately वो neurotransmission को block कर देते हैं. They have the sedative because of the potent antihistaminic activity. ये काफी sedative रहते हैं क्योंकि वो हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं. उनका कोई भी एंटी मस्कुलिनिक साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं और वो कोई सेक्सुअल इंटर फंक्शनिंग के साथ भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं. ओके, side effects, the number of side effects, the side effects which can be induced by them, they can increase the appetite of a patient, weight gain कर सकते हैं, marked sedation, sedative effect इनका काफी marked रहता है. ठीक है, nafazodone and trazodone, they are the weak inhibitors of serotonin reuptake. वो काफी weak वो रहते हैं inhibitors of serotonin reuptake. They block the postsynaptic 5-HT2A receptors. वो उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं. With chronic use may desensitize 5-HTA presynaptic autoreceptor, increasing the release of serotonin. साइड इफेक्ट्स की बात करें, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस कॉज कर सकते हैं. नेफाजिडोन, इट कैन आल्सो कॉज अ लीवर टॉक्सिसिटी, सो वी शुड बी यूज इट विद अ वेरी प्रिकॉशनरी. Okay, coming to the bipolar disorder, I also discussed in my free of the one of the video, first video जिसमें मैंने introduction of depression के बारे में बताया था. So bipolar disorder, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट अचानक से डिप्रेस्ड हो जाता है और अचानक से उसका मूड काफी एलिवेट हो जाता है. इन बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट गो थ्रू द एपिसोड्स ऑफ एलिवेटेड और एगिटेटेड मूड. पेशेंट अचानक से एलिवेटेड मूड में रहता है काफी और अचानक से वो एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन में आ जाता है. मैनिया इज करेक्टराइज्ड बाय इंथ्यूजिज्म, पेशेंट को काफी जोश रहता है. रैपिड, हमने कल भी पीछे स्लाइड्स में बात की थी, रैपिड थॉट एंड स्लीप पैटर्न, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी एक्सट्रीम रहता है और जजमेंट जो होती है वो काफी वीक हो जाती है. क्राइटेरिया फॉर ए मैनिक एपिसोड, मूड डिस्टर्बेंस, डिस्टिंक्ट पीरियड, एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड रहता है पेशेंट में. बिहेवियरल सिम्टम्स क्या रहते हैं, इंक्रीज एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, प्रेशर टू कीप टॉकिंग, बार बार बोलते रहता है वो. फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मतलब एक अचानक से अभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आएगा, अचानक से कुछ और बोलने लगेगा. डिक्रीज द नीड फॉर द स्लीप, उसकी जो स्लीप नीड है वो काफी डिक्रीज हो जाएगी. डिस्ट्रैक्टिबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी. रिस्क सीकिंग बिहेवियर काफी रहेगा. एंड ड्यूरेशन इज एटलीस्ट 1 वीक तक उसमें इस तरह के चीजें ऑब्जर्व होंगी. ओके, लिथियम इज मेजरली यूज एज ए सॉल्ट, लिथियम कार्बोनेट की तरह यूज किया जाता है. दे आर यूज प्रोफिलेटिकली प्रिवेंशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक डिप्रेसिव पेशेंट एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ
मैनिक एपिसोड। अगर मैनिक एपिसोड ही है पेशेंट में, वो हर टाइम एक्सेसिव एनर्जी में रहता है, उसके आइडियाज काफी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो बोलता रहता है बार बार, सो उस कंडीशन में हम इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको मूड स्टेबलाइजर भी बोला जाता है। इट इज इफेक्टिव इन द पेशेंट विद मैनिया एंड विद हाइपोमैनिया। अगर मैनिया है और हाइपोमैनिया है उसमें यूज कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन इज कम्प्लीटली अननोन, कैसे काम करते हैं वो अभी तक नहीं पता है। Safety factor is very low and therapeutic index are extremely low. So these two factors are extremely low in these patients. Okay. Adverse effects की बात करें, these drugs induce a number of adverse effects. They can cause a headache in the patient. They can cause a dry mouth kind of a side effects in the patient. Polydyspesia, patient को प्यास ज्यादा लगेगी, patient को भूख ज्यादा लगेगी और यूरिन भी काफी ज्यादा रहेगा। ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, उसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस रहेंगी उसे। ट्रिमर हो सकता है, उसकी बॉडी एक्सेसिव शेक कर सकती है। डिजीनेस प्रोड्यूस हो सकता है, फटीगनेस प्रोड्यूस हो सकता है, डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन मतलब स्किन एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस हो सकती है, सेडेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, convulsion, but that is only at a higher dosage. Diabetic insipidus that result from taking the lithium can be treated with an amyloid. So this drug can also causes a side effect of diabetes insipidus, जिससे पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एमिलिडोइड के साथ। थायराइड फंक्शन काफी डिक्रीज हो जाता है, सो उस हमें थायराइड फंक्शनिंग को मॉनिटर करना चाहिए व्हेनेवर वी आर प्रिस्क्राइबिंग द लिथियम ड्रग टू द पेशेंट। ओके। ड्रग्स यूज फॉर द मैनिया, अदर ड्रग्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं मैनिया के लिए? वेरियस एंटीलेप्टिक ड्रग्स जैसे कार्बामेज़ापाइन, वेल्पोरिक एसिड, lamotrigine. These all drugs have been approved for the treatment of bipolar disorder because they are all considered as a mood stabilizer. Older, for example, chloromeprazine and haldol, and the newer antipsychotic drugs. Okay, so benzodiazepine are also used as a adjuvant treatment for the acute stabilization of the patient with the mania. So I think I am clear with my explanation. We have discussed about the tricyclic antidepressants, we have discussed about the monoaminoxidase inhibitor, we have discussed about the treatment of bipolar disorder mania जिसमें हम number of lithium को majorly use किया जाता है। We have also discussed about the various antileptic drugs which are considered as a good mood stabilizer. Thank you so much. We will meet in the next video.